Good morning, viewers of Assertive Ayurveda, YouTube channel of Professor Anand Chaudhary sir. I, Dr. Preeti Tamta, PG second year, Department of Rash Shastra एवं Bhaisaj Kalpana, Banaras Hindu University, Varanasi. Welcome to all of you. First of all, thank you so much, sir, for giving us the opportunity to ask few more questions again. And you, Dad, sir, we are so grateful to you. And a big thank you to all our viewers of Assertive Ayurveda for showing so much love to our videos and all those comments too. The today's session will be more interesting than the last one. Sir, could you please give us permission to ask further question? You're most welcome. This is not the formality required. Yeah, please go ahead. Okay. So, my first question is, sir, why does Rasast is kept in non-clinical even after Ayurvedic Rasaushadhis are so much effective? नमस्ते, हार्दिक अभिवादन अभिनंदन आप सबका। और पिछला जो डॉक्टर प्रीति टमटा ने इंटरेक्टिव सेशन रखा था उसका जैसा कि इन्होंने खुद बताया कि काफ़ी कुछ अच्छा रिजल्ट आया, मतलब कि लोगों ने अच्छी उसमें रुचि दिखाई। सो दिस इनकरेज्ड वी ऑल द स्कॉलर एज वेल एज मी एंड वंस अगेन द सेम थिंग द लैंग्वेज। When I am speaking in English, people write that सर हिंदी में भी हिंदी बोलिए, और जब हिंदी बोल रहा हूँ तो विदेश से लोग कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी बोलिए। तो हम लोग मिक्स ही चलेंगे और that will be the better for everyone. Fine. So the first question of today interactive session of Dr. Preeti Tamta is burning problem nowadays, and specifically with the new notification of the NCISM about the PG and the UG syllabi and the courses like that. Here people are keeping Rasashastra as a non-clinical branch, but any a neutral stakeholder, any neutral person will not be agree with this. The reason behind this, see, Rasashastra is a separate entity in its development, in its inventions, in its chronology of the clinical dominance. Yes, mind my words please. The chronology of the Rasashastra, the inventions involved in Rasashastra for making of the Rasaushadhis, as well as the chronology of the clinical prominence of the last 2000 years. You just see it and evaluate. Answer is self-explanatory, and one can get the answer if the mindset is neutral and decisions are based on the fact and the evidences, not on the narratives. Because people are setting narratives एवरी टाइम, अरे रसशास्त्र तो नॉन क्लिनिकल है। कहाँ से नॉन क्लिनिकल है? रसशास्त्र डबल है। रसशास्त्र के पास मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑल डोजेस फॉर्म इन नॉट ओनली द हर्बो मिनरल, नॉट ओनली द रसौषधि, काष्ठौषधि का भी सारे मैन्युफैक्चरिंग रसशास्त्र की थ्रस्ट एरिया है। और साथ में रस चिकित्सक की जो विधा है वो भी रसशास्त्र के पास है। हम बिल्कुल अलग रहे हैं आपसे, क्षमा करिएगा आयुर्वेद के, हम बिल्कुल अलग रहे हैं आपसे। आपसे हमारा विकास एक अलग सिस्टम से हुआ। आचार्य नागार्जुन ने की रस इंद्रमंगल, रस रत्नाकर, हम धातुवाद देहवाद की तरफ गए। बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जल्द शॉर्ट कर रहा हूँ। फिर धातुवाद की प्रोमिनेंसी में हमने काम करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमको लगा कि नहीं, इससे तो हमें we made something on the Devad also. Then we just shifted from the metallic transformation to the metabolic transformation and to the human body specifically. And see, we have taken a lot of time for the invention of the Sodhan, Maran, Sanskar, Amritikaran, Lohitikaran, Varn Pariksha, Bhasm Pariksha, everything systematically. We have spent 1,000 years. No science, it is less than any science.
If you see the initial books, there is no dimension of the put. If you see the initial book, there is no process of the sodhan of the materia medica. But chronologically, when we are developing from 5th AD to the 6th AD, 7th AD, 8th AD, 9th AD, 10th AD, you see then the first chapter of the 100 formulations. Of course, I am not taking the class of the history of rasas, I am not interacting on that. But here I am establishing a fact. The Rasastra and the Rasasastri had developed inventions, the procedures of the making of the all bhasmas and the rasaswati, right? Only not the bhasma, kajali, bhasma, parpati, potali, dhruti, everything, kupi pakorasan, on its own, I repeat, on its own, the sect of the Nath Sampradaya, the sect of the Rasastri, and the many more sects involved here. And due to our magical, not magical, but very ultimate remedial effect of the Rasausadhi, this is the 11th century when people accommodated us, I mean the mainstream of the herbal of the Ayurveda. And now you say that we are the non-clinical? How much it is justified, sir and madams, who are having this opinion? Many people are writing here and there in the WhatsApp university, in the WhatsApp group. No one is speaking, no one is speaking. Rasastra is a clinical branch, Rasastra is a clinical branch. तो लगता है कि सारा आंदोलन करने का मुद्दा या एक्टिविस्ट की डिग्री क्या मेरे पास ही है रसशास्त्र में? इसके लिए कोई मैंने कोर्स किया है कि मैं कोई आंदोलन हमेशा खड़ा करता रहूँगा? 20 साल से तो यही किया है सब्जेक्ट के स्टडी और क्यूरिकुलम के साथ. व्हाट शुड बी द रसशास्त्र एंड व्हाट शुड बी द शेप ऑफ द रसशास्त्र, वी आर डूइंग इट विद द गाइडेंस ऑफ आवर स्टालवर्ड्स. But no Rasastra PG is writing to the government of India, Ministry of Ayush, ki this is my stake and drug inspector post in the CDSU should be reserved only for the MD Ayurveda Rasastra Passage Kalpana. Why? And in the same way, everyone is writing in the WhatsApp group. Why not anyone is speaking on this issue of the clinical Rasastra? अरे भैया आप भी तो कुछ करोगे. और अभी 20 जून तक लास्ट डेट थी क्लिनिकल फार्मेसी वर्ड पर. हमने थोड़ा सा संन्यास ले लिया है. हाँ, मैं इसको स्वीकार करता हूँ कि हमने संन्यास ले लिया है और बहुत सारी चीज़ों से संन्यास ले लिया है. देयर आर द लॉट ऑफ रीजंस. मैंने नहीं लिखा NCSM को कि नहीं हमारा ट्रांसलेशन क्लिनिकल फार्मेसी नहीं हो सकता. मैंने लोगों के दिमाग में बात पहुँचा दी और बहुत सारे सीनियर्स और जूनियर्स को रिक्वेस्ट किया कि भाई आप NCSM को रिप्रेजेंट करो. मेरे नाम से बहुत सारी फाइलें खुली हैं और बहुत अच्छे काम हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में. हाँ, हमारे सचिव राजेश कोटेचा जी ने ही, माननीय राजेश कोटेचा जी ने ही 2019 में हमारे वाइस चांसलर साहब को यहाँ BHU में कहा था. ऐसी एक बात कही थी कि इनके पत्रों पर तो हम फाइल खोलते हैं और अच्छे क्रियान्वयन करते हैं. तो मैं किसी अहंकार से नहीं कह रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ और बहुत साधुवाद आभार वैद्य राजेश कोटेचा जी का, सचिव महोदय का, कि उन्होंने ऐसे उद्गार व्यक्त किए थे आरोग्य के उद्घाटन के पहले जब VVIPs बैठे हुए थे एक साथ. तो हम कितना लिखें? कुछ आप भी लिखिए ना, कुछ आप भी करिए. अब हमको मार्गदर्शक मंडल में हम हैं, है ना, तो हमको जो करना था हमने काफ़ी कुछ कर दिया. लेकिन क्लिनिकल रसशास्त्र के ऊपर अगर आपको बहस चलानी है, आप समझ रहे होंगे जिसके लिए मैं कह रहा हूँ, तो व्हाट्सएप ग्रुप तक मत सीमित रहिए. व्हाट्सएप ग्रुप से आगे निकलिए और नो वन इज स्पीकिंग मत करिए. आप भी प्रोफेसर हैं रसशास्त्र में, आप क्यों नहीं लिख रहे हैं आगे बढ़ करके? वाई यू आर सेइंग नो वन इज स्पीकिंग? अरे कौन बोलेगा रसशास्त्र के लिए? आप ही ना. तो बोलिए और लिखिए. भाई देखिए, ये मेरा अंदाजे में भैया यही है और इसीलिए शायद मैं जो भी हूँ, प्रख्यात हूँ कि कुख्यात हूँ, आप निर्णय करिए. लेकिन आपको अपनी बात उठानी पड़ेगी कि रसशास्त्र क्लिनिकल ब्रांच है. और रसशास्त्र क्लिनिकल ब्रांच है, इसके लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है. पूरा अपना 2000 साल का विकास क्रम उठा करके दे दीजिए उनको. रस रत्नाकर से उठा करके रस तरंगड़ी तक बीच में पूरी पुस्तकों को उठाइए और कहिए, बताइए ये क्या है? ये चरक संहिता का हिस्सा है कि सुश्रुत संहिता का हिस्सा है कि आचार्य वाग्भट ने ये लिखा था?
किसने लिखा ये सारी विविधताएं? एक भस्म से 20 लोगों का इलाज अनुपात से रस तरंगिणी में ही है ना। रसद समुच्चय के ही तो चिकित्सा खंड में बाकी पूरे 30 अध्यायों में अगर 11 इधर किया जाए तो रसद समुच्चय में ही तो पूरा चिकित्सा क्रम है। और बाकी चलते जाइए, रसेंद्र चिंतामणि और नीचे जितने भी हैं, आप नौवीं रसेंद्र चूड़ामणि के बाद आप आइए, आप रस प्रकाश सुधाकर से नीचे आते चले जाइए रस तरंगिणी तक, देखिए कि क्लिनिकली हम लोग कितने प्रोमिनेंट हैं। मैं तो ये भी कभी कभी कह देता हूँ कि जो मुग़ल पीरियड था, या मुग़ल पीरियड नहीं, मैं इसको ऐसे कहूँ तो जो इस्लाम धर्म के शासक रहे भारत में जब से रहे, तो वो तो रसशास्त्र का स्वर्णिम काल था। रसशास्त्र में इतनी विधाएं डेवलप की गई, इतने मोती भस्म बने, इतने स्वर्ण भस्म बने, इतने रजत भस्म बने, और व्याधियों का ऊपर इतनी सारी उन लोगों ने प्रमोट किया, इतनी सारी चीज़ें की। और आज आप एक दिन उठते हैं, 5 लोग बैठते हैं और कहते हैं कि रसशास्त्र नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है। वैसे ही जैसे कि सेल्फ लाइफ पीरियड आपने 2005 में डिसाइड कर दिया, 5 लोग बैठे और कहे कि ये आंख बंद किए, आप तो उपदेश हुए और कहे कि ये सेल्फ लाइफ पीरियड है। तब मेरे जैसे अध्यापकों ने विरोध किया था, और 4 साल सेल्फ लाइफ पीरियड 2005 से 2009 तक एबियंस, केप्ट इन एबियंस रखी गई। जब स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया हमने कहा कैसे आप सेवरिता विधि ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। तब सब जगह प्रोजेक्ट्स दिए गए थे और सेवरिता अवधि पर रिसर्चेज हुई, और फिर 2009 में दोबारा नोटिफाइड हुआ। नहीं तो फार्मा टाइम्स में नवंबर 2005 सितंबर 2005 में एक राइटअप निकला जिसमें सारे के सारे आयुर्वेद की मैन्युफैक्चरिंग जितने भी मैन्युफैक्चरिंग टॉप हैं वो उसमें राइटर थे। कोई भी चरक, हिमालय, सब डाबर, क्योंकि वो जो उनको एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट नोटिफाइड सेल्फ लाइफ पीरियड था, तो ये सब लोग राइटर थे। जितने मालिकान हैं मुल्तानी से लेकर के सब ये लोग राइटर थे, और गवर्नमेंट ने उसके 2 महीने बाद नोटिफाइड कर दिया सेल्फ लाइफ पीरियड। तो एकेडमिया का तो अपना एक मैटर होता है ना, एकेडमिया का अपना इम्पोर्टेंस है। मुझे गर्व है इस बात पर कि मैं जामनगर में था और मैंने इसका विरोध किया और लिखित में किया, और हमारे माननीय तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर एस सावरकर साहब ने भी कहा कि नहीं, ये कैसे डिसाइड हो गया। अरे हम सेल्फ लाइफ पीरियड पढ़ते पढ़ाते हैं, हमें पता है कि इसके लिए, और उन कंपनी वाले लोगों को भी पता था कि इसमें ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने अपनी स्टडीज़ की होंगी, उन्होंने प्रपोज किया फार्मा टाइम्स में कि ये होना चाहिए, वही उठा करके गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया। तो ऐसे नहीं चलता है। फिर 4 साल सारी रिसर्चेज कराई गई, कंटेम्प्रेरी रिसर्चेज कराई गई, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत मेहनत की, देन डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने, और फिर 2009 में सेल्फ लाइफ में आज भी वही चल रहा है। आप उठते हैं, 5 लोग बैठते हैं, और पूरे 2000 साल की मेहनत को you are just keeping in dustbin the 2000-year process of the development. Inventions, not the development, innovations, inventions in the real sense, nowhere in the world. Yes, I'm repeating my sentence, my dear viewers, nowhere in the world any civilization got success in the conversion of these toxic metal and the material, industrially toxic metal and material, into the form of a medicine, except the Rasastris of the Aryavart or Bharat or Hindustan. Whatsoever word you want to use, you can use. तो ये है रसशास्त्र की महत्ता। और आपने 11वीं शताब्दी में आचार्य चक्रपाणी ने चक्रदत्त में रसौषधियाँ लिख ली, और उसके बाद रसशास्त्र वाले बेकार के हो गए? जी नहीं, न्याय करिए। और न्याय ये है कि रसशास्त्र क्लिनिकल ब्रांच है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग। तो वी आर ब्लेंड ऑफ बोथ द आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स एज वेल एज द रस थेरापेटिक्स। आई थिंक दिस क्वेश्चन गॉट मी given me energy. I'm not emotional, I'm talking on the fact and the evidence. अगर आप रसशास्त्र को नॉन क्लिनिकल करते हैं तो आप भारतवर्ष के 2000 साल के इतिहास को झुठलाते हैं, जो रसरत्न रत्नाकर से लेकर के रसरंगणी तक आता है। कृपया ऐसा न करें, निवेदन है आपसे, नम्र निवेदन है। आप शासन में हैं, आप सत्ता में हैं, आप सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं, तो अपने व्यूज से मत करिए, तथ्यों के आधार पर चलिए। और तथ्य कहते हैं कि रसशास्त्र क्लिनिकल ब्रांच है, और रसौषधीज का इन्वेंशन पूरी विनम्रता, नम्रता, आदर के साथ
आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट ने नहीं किया है। इस पर आचार्य नागार्जुन ने किया है, आचार्य सोमदेव ने किया है और आचार्यों ने किया है। आचार्य सोदर भट्ट ने किया है, रसशास्त्र वाले आचार्य नागार्जुन ने किया है। नीचे तक आइए तो सदानंद शर्मा जी ने किया है, माधव उपाध्याय जी ने किया है। क्यों प्रभु सबको आप किनारे रख देंगे और कहेंगे कि नहीं, जो आयुर्वेद में रस चिकित्सा बीच में आ गई चक्रदत्त के बाद, वो ये सब लोग कुछ नहीं है और रसशास्त्र नॉन क्लिनिकल ब्रांच हो गई? क्या हो रहा है ये? जस्टिफाइड एक्शन लीजिए। रसशास्त्र इज द ब्लेंड ऑफ द फार्मास्यूटिक्स एज वेल एज द थेरापेटिक्स। डॉक्टर प्रीति, आपका कोई और क्वेश्चन है? Thank you, sir. Thank you so much for your informative explanation. My next question is, sir, what is the journal duration and doses to take bhasmas for patient? This means that today's session you have decided on the Rasashastra only. Okay, fine. So just with my full humbleness and with the fact and evidence, I'm establishing this point that Rasashastra is a clinical branch. Along with the pharmaceutics, it is the blend of both. When you are talking about the dose and duration of the Rasausadhis, of course, it is a matter of serious discussion in the debate, and here is the need of assessment and the evaluation of the safety profile of the Rasausadhis once again. Why I am saying once again? Because previously, when Rasacharyas have just innovated all these Rasausadhis, all varieties, right from Kajri to the Kupi Pakwa, they have observed and they had given all these things. If you are preparing anything from the impure material, these are the toxicity. If your bhasm is apakwa, these are the toxicity. If your dose duration is not good, then this is the toxicity. But now, due to some mixing, a lot of reasons are there. People are hurry in the even manufacturing also, not following the classical procedures. Most effective reason is the commerce, to reduce the cost. Some people are applying shortcuts and some people are not applying shortcuts. These are in the market at par to any as a good medicine, as any medicine should be. In the same way, if the dose and duration Shastra is very clear, it is the jurisdiction of the Rasacharya, Ayurvedic physician, in which dose and what duration as per the disease and the prakriti of the person, it may be applied. See, Acharya Sadanand Sharma said, law of bhasma may be given to the 1 samvatsar. 1 samvatsar means 1 year, but the dose is there. Same for the abrak bhasma. But it is not true for the hartal bhasma or the manasila. It may not be true for the sankhya. It may not be true for the even other where ki tamra bhasma. So this dose, see, if you are talking about the dose is also very much varying from 3 to 4 mg of the 1 by 120, 1 by 60 rati of the sankhya to the 2 rati of the law bhas or 2 rati of the godanti bhas. Like that. Are the even the gram, this calcium Sudhavar ki jo bhasme hai, all the products of the Sudhavar, here it is the dose is the up to the gram, but here is the complete jurisdiction of a expert. That is the you, that is the physician, and the disease involved there. बहुत सारे मेरे मित्र हैं, मेरे को लर्नर्स हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस रसशास्त्र की कर रहे हैं। मेरे सीनियर्स हैं, डॉक्टर नेचिल, मैं नाम भी लूँ तो मुझे अच्छा ही लगेगा। प्रोफेसर नेचिल देयर इन द त्रिशूर, वैद्य बालेंदु प्रकाश, और नए लड़कों में नाम लूँ तो
संजय खेड़कर, या इधर हैदराबाद में नागार्जुन कोट्टी, या अभी बिल्कुल नज़दीक प्रयागराज में हमारे डॉक्टर रंजीत शर्मा, ये सब लोग बहुत अच्छे रस चिकित्सक बन चुके हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, द लास्ट 5-6 years. I'm not talking about Professor Nechil and the Vaidya Bharandu Prakash. They have given their life for the Rasas. But these new guys, 3-4, what I just told, and individually independent private clinic, no government sector, and they are writing all these things very good, and they are claiming, yes, I have given Swarnamalti Vasant for the years, I have given Arogavardhani Ras for the 6 months, I have given, and I am going for the RFT, LFT continuously, and they have all the data. They have all the data. And one more roaring practice. See, one thing is very clear, Dr. Preeti, I am telling you, and you just examine it. Any successful physician of Ayurveda having an OPD of more than 200 in private sector or the government sector, his success is mostly depending on the Rasausadis. He or she is writing Rasausadis. Yes, of course, you may talk anything about the Rasausadis, but without Rasausadis, there is no result. And this is the reason why the Acharya Chakrapani amalgamated the whole Rasastra, and in the later, in all the Tika Tippadi of the Charak Samhita, these Rasausadis were given. And we see the finally Bhaishya Ratnavali. For every disease and for every disorder, there is something like this, right? So the dose and duration is depending on the jurisdiction of the physician and the condition of the patient. Shastra is saying one samvatsar. Shastra is saying up to 6 days only. And Shastra is saying, yes, dose may be 2 mg, and Shastra is saying dose may be 250 mg in the modern terminology. Go through this. So it is the jurisdiction of the physician. But ये सब narratives हैं. हाँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि narratives हैं कि रसौषधियों को 1 महीने के बाद बंद कर देना चाहिए या 15 दिन से ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए. These all are narratives. अरे आपको शक है तो RFT कराइए ना. मैं खुद बसंत कुसुमाकर और स्वर्ण बसंत मालती, मैं स्वयं रसशास्त्र का विद्यार्थी आनंद चौधरी कंटिन्यूसली ईयर्स एंड ईयर्स खा रहा हूँ. मेरे मित्र हैदराबाद से नागार्जुन ने मुझे सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म खिलाई. मैं सारी रसौषधियाँ खा रहा हूँ. इसमें सारी LFT और RFT मेरी कंटिन्यूसली ठीक आ रही है. और ईश्वर करें कि मैं आप सबकी सेवा के लिए कुछ इसी तरीके से स्वस्थ रहूं. तो मुझे तो रसौषधियों ने ही स्वस्थ कर रखा है, और मैंने ये रसौषधियाँ लगातार वर्षों से खा रहा हूँ मैं. लेकिन हाँ, ठीक है, ये भी सही बात है कि सुरक्षात्मक पहलू हमेशा रखना चाहिए, और किस कंपनी की आप दवा ले रहे हैं उस पर भी ध्यान रखिए कि हु इज सप्लाइंग यू द मेडिसिन. सेल्फ मेड मेडिसिन आर ऑलवेज बेटर, and some manufacturers are always are very good, and they have their own reputation. And I always say in the sense that the Dudh Papeshwar may be believed, Dabur may be believed. So things are like this. But the self-preparatory medicines prepared by these Rasacharyas, Vaidya Bharandu or the Professor Nechil or the Nagarjun, Dr. Suren Sharma ji there, or anyone's here in the practice, मुझे नहीं पता कि ये मेरे नए बच्चे खुद बनाते हैं या कंपनियों का लिखते हैं. मुझे लगता है कि ये लोग कंपनियों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. फिर भी ये डोज ड्यूरेशन टोटल, डॉक्टर प्रीति बहुत अच्छा प्रश्न आपने दोनों किया कि रसास क्लिनिकल है कि नॉन क्लिनिकल है, और डोज ड्यूरेशन ये आज के समय पर डिबेट की मांग है. लोग अपने, मैं ये नहीं कहना चाहता कि अल्प ज्ञान से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञान के अतिरेक में, I should speak in the English so that everyone should understand what I am willing to say, what I am submitting. Due to the excess flow of the knowledge of the modern medicine and the modern science, and not going in depth of the Rasas and the procedures of the Rasas, the narrative have been developed by many elites that these are the toxicity and the duration is toxicity. Of course, these are, when they are not prepared at par to the classics, they are the poison.
Every ras bhasm is poison. And why every ras bhasm is poison? Triphala churn is also poison. If it is prepared with the contaminated all the ingredients of the amla, vivitiki and the hara. So you have to take care. You have to take care during the manufacturing process. If rasausadhis are being made with the quality assurance and the quality control, then the safety efficacy, and it is the true for the Satavari churn also. So it is not like that rasausadhis are very harmful and its dose duration are very much debatable. Shastra has given and your personal experiences are there. Go for the LFT, RFT if your any patient is on the medications on the rasausadhi and you yourself decide it. Thank you for this good question, Dr. Preeti. Yeah, please. Thank you, sir. Sir, my next question is, many people think Ayurvedic medicines have no side effects. Is this just a myth? Partially, I answered this question you just back 2 minutes. Yes, it's a myth. It's not reality, it's a myth. Every natural thing is safe, myth. All Ayurvedic drugs are very safe, myth. Not reality. It is a false propaganda. Made by the, created by the, even Ayurvedists, physicians, manufacturers, who has any commercial interest. This is the lack of knowledge. And this is the reason, these are the reasons कि Ayurveda is being blamed. Because Ayurveda is safe, तो आप इसको बिल्कुल दाल चावल की तरह से घर में बना के खाइए, सब सेफ है. नहीं, अभी सतारा में हुआ ना, ब्लेम किसको आ रहा है? आयुर्वेद को. बट हु इज द रियल कल्प्रिट? Those who are propagating Ayurveda as a home remedy, no need of any Ayurvedic physician for consultation. And most responsible is the person who was doing all these things. Where is your mind? Why you are running behind the freebies? फिर आप कहेंगे कि the economic status of the people, as per as I know by the reports of the Times of India and the Mahakal of the Maharashtra edition, that the boy is employed in nationalized bank who died. So why people are running behind anything? Why not they are making a rational thinking? Why people are not doing reasoning? गिलोय पीना है, कोविड में लोगों ने गिलोय इतना पिया कि सब कुछ खराब हो गया. तो ये माइंडसेट, ये एटीट्यूड है और ये मिथ है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आयुर्वेदा इन 2008 and on the pursuance of the WHO. So this pharmacovigilance program is really, really very important. And this is Dr. Preeti, I'm sure I'm saying it, every Ayurvedic medicine is safe, it is myth. Nothing in this world is safe, it is the myth. If you are applying it in an unappropriate way, and this unappropriate way may be in the manufacturing or the dose or the duration or the wearing or the anything else, that is not safe. If you are going for the boating in this flood of the Ganga, that is safe. That so every time boating in Ganga is safe. काशी चलेंगे तो गंगा का सैर करेंगे. आज ही के पेपर में आया कि बैन लग गया है कि अब गंगा में नावों की सैर नहीं होगी. तो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. माय पॉइंट इज दिस, व्हाट कंडीशन. गंगा में नाव की सैर बहुत बड़ी चीज़ है, क्रूज पर है. कब? जब नॉर्मल वाटर फ्लो हो, विंटर सेशन में, समर सेशन में. अभी फ्लड एरिया है, सब कुछ बंद है. वही हाल अपनी आयुर्वेद की दवाओं का भी है. अगर सब कुछ जेन्यून है, सब सेफ है, और थोड़ा सा भी इनजेन्यून हुआ, कंडीशंस कंप्रोमाइज हुई, सेफ नहीं है. तो इसलिए ये मिथ है कि हर चीज़ हर तरह से आयुर्वेदिक औषधि in every condition is safe. It is a complete myth and nothing else. Yes, please, next. Thank you, sir. Thank you so much. My next question is, if any patient is taking medicine, then what is the role of diet? Means pathya, apathya in it. If anything which is affecting directly
on the efficacy of a medicine, whether the caste औषधि or रस औषधि, is the diet only. बहुत अपने शास्त्रों में लिखा गया है कि अगर आपके आहार ही मुझे वो पर्टिकुलर कोट नहीं याद आ रहा है, आहार को महौषधि कहा गया है आचार्य कश्यप के द्वारा। कि आहार क्या है? महाऔषधि है। और हम लोग क्या हैं? चाहे काष्ठ औषधि चाहे औषधि, हम लोग औषधि हैं। और आहार ही क्या है? महाऔषधि है। तो जो महाऔषधि है तो महाऔषधि है, सिंपल। तो डाइट का रोल तो बहुत ज़्यादा है। और डाइट का रोल, मैं ये जो अपने मॉडर्न हॉस्पिटल्स में डाइटिशियन की जो नियुक्तियाँ हो रही हैं, जो इस पर लोग अब पीपल आर टेकिंग केयर अबाउट द डाइट, everyone is taking care about the diet now for the health purposes and the health reason. That's very good. I appreciate it. But in Ayurveda specifically, if you are going for the Kashtasudhi or Rasasudhi, diet is the most important. See, in our department, when we are treating psoriasis in our OPD by our young colleague Dr. Guru Prasad Nile, then he is emphasizing with the medicines and more emphasis on the diet and giving the restriction chart. So diet is really very important. और रसौषधियों के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक कॉमन मैं बोल सकता हूँ कि अम्ल रस और उष्ण वीर्य के जो भी पदार्थ हैं आहार में, उनको अवॉइड करना चाहिए जब आप रसौषधि पर चल रहे हो। और रसौषधियों के लिए तो क्षेत्रीकरण की भी बात कही गई है कि पहले शरीर को तैयार किया जाए, क्षेत्रीकरण किया जाए, तब रस औषधियों का सेवन कराया जाए। वो पूरी प्रक्रिया है। लेकिन आज के आधुनिक युग में समय नहीं है आम जनता के पास, और इलाइट्स के पास तो और ज़्यादा नहीं है कि किसी के पास भी टाइम नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं है आजकल, किसी के पास टाइम नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो टाइम कहाँ चला गया है सबका, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है। और वो उन चीज़ों को पालन नहीं करते। लेकिन डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर आप रस औषधि ले रहे हैं तो किसी के साथ, जैसे कि पुराने साले चावल, गेहूं, मूंग दाल, गोदुग्ध, दही, स्पेशली घृत, ये सारी चीज़ें कही गई हैं कि इनको लेना चाहिए। लेकिन मेरी बात सुन के नहीं लेना चाहिए। अगर कोई सामान्य व्यक्ति मेरी बात सुन रहे हो तो उनका स्वागत है। आप कोई भी पथ्य अपथ्य तय करिए अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के दिशा निर्देश पर, किसी अखबार के राइटअप को पढ़ के नहीं। फिर से ध्यान दिला रहा हूँ, यदि अखबार में, मीडिया में वो जो लेखक है, इफ़ द राइटर इज़ एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, यू फॉलो इट। बट इफ ए राइटर इज़ द फ्रीलांसर हैविंग गूगल ज्ञान only and columnist and writing 10 good things for the monsoon, 5 good things to clear your bowel in monsoon, 7 good things to have a very good sleep, 9 good things for your cognition report, and you just check the credential of author, and the author is none other than a freelance journalist. I'm not questioning the journalist. Journalist is a very vital and very responsible section of the society. They do the researches and then they write all these things. Yes, it's true. They do the researches, they consult the people, then write down things. But even that, with due regard to the journalists, I differ here. कि Ayurveda is not like that. कि anyone without consulting Ayurvedic physician may take any drug. Thank you, Mr. Journalist or Miss Journalist, for propagating Ayurveda in this way. But write down a single line in your every script. These are something from web knowledge or the expert, as per the expert opinion consulted by you. But a patient should administer all these things with its nearest Ayurvedic consultant with her consultation. Thank you for this very, very nice question, Dr. Preeti. Anything more? Thank you, sir. Sir, my next question is, which Mardan procedure is correct to do with machine or by hand? And what is the importance of direction while doing Mardan? How to answer it? Answer is two. One theoretical, one practical.
theoretical answer is manual Mardhan is always better, right? But in the manual Mardhan, the hours and the pressure required for the Mardhan and the Bahubal of the person who is doing it is different with the different reasons. Anyone can do the Kajali preparation up to with all the Lakshans of the Nishchandrik in 4 hours. Someone can do 6 hours. There is no informative. But if the whole process is being done by a skilled person, मर्दनिस्ट, नया टर्म हमने एक दे दिया, जो मर्दन कर रहा हो उसकी मैं एक्सपर्ट हूँ और एकदम एक जगह पालथी मार के बैठता हो और फिर मर्दन करता हो. और डायरेक्शन की जो आप बात कर रही हैं, तो इट इज़ ऑलवेज इन द शेप ऑफ 8. It is always in the shape of 8 is the better in the kalb. Only direct rubbing is not not said. So pharmaceutically all angles, and we have studied with our you people like the kicks bond and the bonds, many bonds which are under the rheology, the breaking of the surfaces and all those things. Here is the shape of 8 is always better for the murder. Good. I'm happy that you are raising these questions. But the practical answer is that nowadays everything is mechanical. And every mechanical will be someday automated. So it's a process of the development. Everything first the thought, then the manual, then the mechanical, then the semi-automatic, then the automatic. See, everything is like this. Every field of life, every your electronics, what you are using, your all home appliances, like washing machine to anything. So first is manual, then mechanical, then semi-automated, and finally automated. So for the Mardan also, most places, I can say 98% cases, mechanized curl machines are being used. And here is the one benefit also. The pressure is the maintained, duration is the maintained. It is not depending on the individual muscle power. It is the machine muscle power, and machine power is always same, right? And whatever the characteristics you want to get there, the Siddhi Lakshans, that you can maintain through all these mechanized process, and day will come when everything will be automated. See, in the Kupi Pakko, people are developing for the preparing of the Kupi Pakko automatic muffle furnaces. You set the temperature for the 24-hour, and you have nothing to do, and there will be the temperature will be maintained 24-hour as per your setting, and but you have to be there at the adjacent to the Kupi for cleaning of mouth, etc. Then, so this is the process, Dr. Preeti. Simply first manual, then mechanical, then semi-automated and the automated. पहले घड़ियों को हम लोग चाबी देते थे, फिर बैटरी आई, फिर ऑटोमेटेड हो गया. तो इट इज़ आयुर्वेद में भी और रसायन में भी टेक्नोलॉजी तो लेनी ही पड़ेगी ना. टेक्नोलॉजी का स्वागत करना चाहिए, एंड वी आर वेलकमिंग ऑल टेक्नोलॉजीज, ऑल साइंस हियर in Ayurveda and the Rasa, specifically the pharmaceutical technology in the field of Rasas in the Vaisheskalpana. Yes. Okay, sir. So here all our questions are finished. Oh. So if your questions are finished, then we must thank Aparna, who is making this video and having the patience. In fact, that today she has to rush to the Department of Food and Technology for her research work on the nutraceutical, but she is giving time. So Aparna, thank you to you also for your precious time, and Preeti, thank you to you also for raising these good questions. And one thing, develop confidence. Being a core learner or being a scholar of the postgraduate, here is the need to develop yourself in a very proper way in all angles of life, on all accounts of life.
So this process I initiated with my PG scholars, my dear viewers, to make them confident to raise the questions, and they are writing their questions own, and I never said them to show me the questions, and they are writing their questions own, and they are asking, and I hope these sessions will be helpful to all my co-learners who are attached with me as a postgraduate or as a PhD scholars. Next interview is also very interesting, and see, wait for the, this will be launched on the Sunday. Now the intercession with the scholars, with even the undergraduates are also in the queue, and we will meet you on every Sunday. Thank you for listening us. Encourage Dr. Preeti specifically for raising good questions, for showing good confidence, for her. I appreciate her volume, tone, expressions, which are required to interview anyone. It is the characteristics of an anchor or the journalist. So all these PG and PhD scholars, even the UG students, are developing them into this form. And I thank you all viewers of the, or learned viewers of the Assertive Ayurveda, who are encouraging us, motivating us with the new sites and the new thought processes. Thank you. We will meet again. Thank you. Thank you. Abhinandan, Abhivadan. हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे. धन्यवाद. And thank you, Dr. Preeti. At last, I would like to say that your willingness to share your knowledge and insight has been inspiring. Sir, it's evident that you possess a genuine passion for teaching, and your explanation was clear, concise, filled with enthusiasm, making even more complex concepts seem approachable and understandable. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for your nice words.